track. I mean, this is more true for the Subhash Bose case because this thing happened. It's also part of the larger story, so to speak. It's almost like some of you would recall, even in America, we had this Watergate scandal. There was a thing called Deep Throat. Somebody who was informing the Washington Post journalists about something, right? Inside what was happening inside the government. So I, in a sense, I was able to reach somebody in the system, and whatever I have been saying of the basic crux of the story, it came from the government level, the government source, highest level. So that was something which turned everything around for me. So it's almost like a deep throat sort of a thing that you have been told this is India's best kept secret, and this is what it would entail. After 20 years, I find that whatever I was told back then, 90% is almost correct. So that is something which got me going. So this is something which has to be described with great details and then context, and it should. Latest cover-up are also hot-selling cakes amongst his work. So what prompted you to write about Shastri, this book? This book, first of all, see, when I was looking into the Subhash Bose case, invariably, wherever you go, whoever you talk to on this issue. Now, the two conspiracy theories, as we knew them when we were growing up, happen to be connected. Happen to be connected in the sense that people used to talk about them together. So there have been many mysteries in the Indian political domain. So at least in Delhi, here where I was born, this is my city. So people everywhere used to talk about Lal Bahadur Shastri. Look at Subhash Bose's death. There have been other issues, for example, Shyam Prasad Mukherjee's death. I believe there is some controversy about it, but then people hardly talked about it here. But two issues which have been discussed at great length especially here in Delhi or in North India, that everybody was, wondered what really happened to Subhash Bose and Shastri. So these stories are somewhere intertwined, twined rather. So when I was pursuing the Subhash Bose case, people, including those from Shastri family, they would tell me these two cases are interlinked. And so this idea was somewhere in the back of my mind, and then it started with an RTI because we used the RTI to dig out information about Subhash Bose when the RTI happened. In fact, we also used the American Act also, but a separate story. So we used the RTI to dig out information, to get information from the government side, because RTI was being used and still being used by people to settle personal scores. I want to know something what MCD has done or not done. I want to know something about a pension. People file an RTI. So we started this process of trend of putting questions about political big events which concern all of us. So we use RTI. So we use the RTI for Subhash Bose case, and then it was in this context, like in 2009, I filed the first ever RTI on Shastri issue. So this is how it started. Then I wrote a few articles here and there, and to me they were the best articles on this issue because I was precise and to the point. Then things changed for me when Mr. Agnihotri called me. His places called me first, and then he called me. And the filmmaker. So then, of course, I had many discussions with him because he was going to make a film, and I was, in a sense, part of it. I let him know whatever I knew about this case. Then I thought that now that the movie is coming out, because the difference between this case and the Subhash Bose case, Subhash Bose case has been there on the horizon. It's a big issue. There have been many committees for a variety of reasons. Subhash Bose is very high about and this issue was somewhere in the bottom, hidden. People knew nothing, and it was hardly discussed. There's never been any committee on this particular matter. There are no files about it. Subhash Bose, you have files even in America. So you have no files about this particular case. So I thought that now that the movie is coming out and people will discuss this case, so might as well I try and bring together. So I knew it's not going to be very thick, but let me attempt. So I attempted. So this again was not an accident for me. I brought it out, and then this is the only book you want to know about the Shastri, death mystery. This is the only book available. What Wikipedia has written is nonsense. I mean, can you imagine Wikipedia, somebody writing something on Shastri's death? We have not mentioned me. Somebody's got a proper book on this out, listed on Amazon, doing very well. They are quoting some fellow who died 40 years ago and who wrote one small line here and there. How can you even compare something like me with people?
So they have their own biases, you know what, True, true. and they are not relevant in almost. It doesn't make any difference to me what they write about me. I'm not concerned. I have sufficient audience, interested in what I'm doing, so I don't care about it. True, true. So now coming to the subject of this book, the 1965 India-Pakistan war, and where India emerged victorious, occupied some strategic positions like Hajipir and all, and then a mysterious death happens of our Prime Minister when this Tashkent agreement is finalized. So when you see the details of Tashkent agreement, does it sound like that India has won that war? Or it is more of a compromise? I will not get into that because I'm not an expert of security, and I'm only concerned with the issue of his death. So because the thing was the accord was signed about 4 or 5 o'clock. That the movie thing that we see the reels, pictures of Lal Bahadur Shastri with Ayub Khan and shaking hands and whatnot. So that happened something like around 4 or 5 o'clock. So till that time, and because we have almost 60 odd people from the government of India, including our Home Minister, Foreign Minister, they were all present there. So till that time, Shastri appeared to be very much vigorous. He was going around. So this person had a heart condition earlier, but till that time he was perfectly fine. And so whatever happened afterwards. And there are of course problems which are part of the narrative later on. That we did, Shastri did concede something there. And there have been accusation he was put under, he was forced. मेरे ख्याल से उनकी डेथ जहाँ तक जो मेरे को लगता है कि प्लान तो नहीं थी जब उन्होंने ये साइन करी थी ट्रीटी उसके बाद ही प्लान करी हुई बिकॉज़ people were not happy with his आप बात कर लेना और फिर आपको आंसर करेंगे. Let us finish first, ठीक है? एक वैसे थोड़ा disorderly हो जाएगा. That's right. After some time we will open. Sure. With everybody will talk. That is the thing we'll do. That is what we'll do. Probably moderate. पहले आप एक बार थोड़ा ही नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना. But she is also correct. But only कि this the way is happened कि I am not very much concerned with that one. But there has been accusation and allegation. Something was The Shastri ji, returning Hajipir was not good, and that's why it went against us when the Kargil war happened. So there have been allegations, and that is part of the story that people alleged the Shastri ji was put under pressure. That is why he conceded these things which would not have. Among others, Atal Bihari Vajpayee was not very happy with it. So in fact, Shastri ji was under tremendous pressure, so to speak, in a way. But and some people have even stated, Shastri ji was under a lot of pressure. That's why he gave up. Oh, it's not that. He was Prime Minister. He was a Home Minister. He wouldn't give in to such kind of pressures. In terms of he's so weak that he'll die just because somebody is criticizing himself. In that way, it was not. It didn't happen, but yes, there was something of that sort. But then I am totally focused about the death part. I am not concerned much with the other aspect, which is I've covered in passing. Yes, there was an allegation, and that makes for a particular conspiracy theory also. Okay. But I am totally that's where I differ from many other people. And let me not name, but let me give you a book written about Hitler's death. Somebody came out with a conspiracy theory that he did not die, he was an Argentine. And that book was discussed by Advani ji and Kamal Hassan. Kamal Hassan thinks it's a fantastic book. I don't know from where he got the idea. But so this was being discussed by them a couple of years ago. I happened to take a look at the book. The thing forget about being a conspiracy theory or what it is based on. All the claims are based on some obscure sources. But the entire book, there are 12 chapters, of which 10 chapters are about Hitler's life and times. So only 2 chapters you get something about the main issue. Now with me, whether it is Subhash Bose's case or the Shastri issue, when you pick up my books, you will get only about the death. So I am not into life and times, so I will not bore you with what happened back in the day. I will focus clearly and specifically on the issue of death. What are the theories? What are the plus and minus? And I will take a stand. Like Subhash Bose thing, I've taken a stand on it. So I'm not like standard journalist. I take your bite. Kanishk is saying so. No, I'm not. I've given my own opinion, and I have taken a clear stand that the death was not natural, and I give my reasons for it. So people either on Wikipedia or otherwise, they're free to counter me. And here also, I learn constantly. I keep on learning. People meet me everywhere, and they keep telling me this is wrong. Fine, tell me so that we can keep improving. मुझे भी तो जाकर के ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है. मैं किसी को झूठा नाम दे दूँ यहाँ पे कि उसने मरवा दिया. कल को I have my own conscience. I will never put anybody's name just because I have to settle some score. Everybody has to answer to the God Almighty after this life is over. So I will put only which is based on facts, evidence, and data.
So same thing applies to Subhash Bose, and this is not a biography, nothing to do with, only focused on the death part, and what are the theories on record, and what are the pros and cons of those theories. So let us start with the first thing which your book mentions in the first chapter itself, the post-mortem report. And there are varying claims. Some doctors are, signatures are missing, there are 7, then there are 6 doctors. Could you please I elaborate think on that is not that much relevant in the sense that there may be small errors. Somebody so big dies suddenly. Postmortem Death not by being itself conducted. is a big problem. But as I look at it, you have to first see the basic theory. The theory is the official version of Government of India is Shastri ji was a heart patient. So he had 2 of these attacks or two. So he was a heart patient, and so he died of heart attack. The third one happened, and it can happen to anybody anywhere. So that's one way of looking at it. The counter view, which was and has been supported greatly by his family members and those who support Shastri ji and others who was very close to him, who had no axe to grind, no reason to tell lies, like Jagdish Kodeshia, former Congress party chief, very close to Shastri ji, Pandit ji, everybody. So he had no reason to tell lies. He was very close by, and he all his life kept on saying that something is wrong here, and he used to give his own reasoning. So first thing that we need to figure out. So there's an official view that he died because of a heart attack, and he already had 2 of them in past. And the other option is the theory, the counter theory or the conspiracy theory, as it were, that he died because he was killed, poisoned. Somebody poisoned him. So first we have to find out whether or not that accusation is true or not. It is only then I get into the other thing. So there you have got the point. The only way we can find out whether or not somebody has been poisoned is to go for a postmortem. Unfortunately, there is no other way. And it is very common, it's done in everybody's case. In fact, in the case of Yasser Arafat, for example, there were rumors of he had been poisoned, but nobody bothered. But for them, they buried the body. So the body was dug out in the case of Yasser Arafat. And after many years of his death, they found out there was something wrong. So people, I think there have been accusation that Napoleon was also poisoned. Yeah. So they did post-mortem. They keep on researching. History is not like in India. Just because I do not like Subhash Bose, I want nothing about him. But unfortunately or fortunately, all over Europe, America, that's what history is all about. History is not just about my wanting to know what Akbar was doing. I'm also keen to know what happened to Subhash Bose. That is also history. So to come up with an argument that it is useless or a conspiracy theory, I'm sorry, nobody is bothered about what happened 500 years ago here. So we are interested in history. The whole topic is, I'm also open to the idea of somebody saying, and Renu has a book about Rajiv Gandhi assassination, that it was also there was an inside job. I personally don't believe it, but that people are free. In that, history is about finding about everything. So one should not restrict one. It is as dynamic as any other subject matter. And just because I do not like politically, I think this is going to go against me. I come up with all kind of excuses, like conspiracy theory, it's fringe elements, and that's just nonsense. All over Europe, America, for hundreds of years, they have been doing researching, finding out. In fact, in UK, there was a story going about this king, I don't know, William or whoever, who died 1,000 years back. Probably he was contemporary of Anand Pal Tomar. So they eventually, after so many years, because of one lady who was not a historian, they were able to locate his remains, had them seen by DNA expert, and the things came out. And it became a big event in the entire world. So people keep on researching. So when we are willing to look into cases which are 2,000 years old, now for example, there are claims that Prithviraj Chauhan, now that we are talking about him, not very far from here, is this fort, Lal Fort. They said there's a rumor, and people say that the Prithviraj Chauhan was killed, they say, in Ghazni. So when you go to Muhammad Ghazanvi's tomb, there's actually a tomb which locals say it is Prithviraj Chauhan's tomb. So why don't somebody, we can get the DNA samples and do it. In the West, they are doing for many more people like this. So likewise, so people should talk about Shastri issue, and if we must find out whether this is right or wrong. So now, in the case of Lal Bahadur Shastri, the problem is there is an allegation of poisoning. Now we don't have any data. What do we have? So what I did was, of course, we don't have the postmortem was not done. But all the same, I do not know. I am not an expert. I am not a doctor. I am not a forensic pathologist. I contacted many of them, 10 odd forensic pathologists, and of some of
whom have been named in the book because not everybody wants to be named. This is a very controversial issue. So I collected the data, whatever was available. There were some statements given by Government of India in Parliament. So you get those statements. You take pictures. Now, luckily, there are pictures of Shastriji's dead body in Tashkent. Then you have the other data. It was January. January is pretty cold. Even in Delhi, it's very cold. Now you're talking about a place which is like minus whatever. So the body was flown to Delhi the same day. He died early in the morning, 1 o'clock, and by 2:30 the body was here, and all the reads are available. And luckily, we have a color pictures of the dead body taken by the American Life magazine. So luckily, they have uploaded the high resolution images on Twitter, Facebook, on social media. On internet. So I could download and So I collected all the data about what happened, what problems Shastriji was facing, what the doctor took, the doctor who was there with him, what medicine did he give him, and after Shastriji died, what were the to preserve the body, what kind of things are pumped into his body. I am not an expert. I'm not a doctor. So I got this entire data and consulted number of forensic pathologists. The first thing we have to find out whether or not the story about poisoning has any element of truth, substantial truth on it or not. So that's all 10 of them told me categorically this is an open shut case of poisoning. I mean, if you see, for example, when the body was brought here, and you leave aside the circumstantial data part. For example, Shastriji's family went on record to say we were prevented from coming closer to the body. So why would somebody try to not prevent the family from actually coming closer to the dead body? And when they pointed out something wrong with his face and so on and so forth, they smeared sandalwood and all that. So these things gave rise to a lot of speculation, and the family from the day one had the doubts. Shastriji's mother had a doubt, Shastriji's wife had doubt, which she continued to believe all her life, Lalita Shastriji. And then, in fact, most people don't know what shape the body was brought here. I'm not even, taking into account that when the body was brought here, people were laughing at the airport. You have the videos available. I put them up, on Facebook, and Twitter, also everywhere. So why would people be smiling? I mean, they're starting to smile. What? Somebody has died, the body is being brought, Russians look somber, and the Indians are all smirking as if something, great things happen. So I'm sorry, in any other case, this would be taken to be, evidence of guilt. Right. So here nobody bothered. So anyhow, but this happened, and then the body was brought here, and so the body, the way that it was described by his family, there was a hole on the back of his neck, from which something like blood-like things coming out. In fact, stomach, the skirt was there. The body had a hole on the back side. His wife said very clearly. The other members of the family, his nephew, Sunilji is not here. He would have said, because I've spoken to all of them. The whole family, others also who are not part of family, with the hole on the back of his hair, and all the clothes, including those soaked in blood. What they thought was blood. What was it? We do not know. Nobody has done any testing. So this body was brought in that shape, and so this is what I discussed with the forensic pathologists. More than that, forget about these things, because there was an answer for all this. The thing, the body's shape was what? Body, they said, was black on this side up. It had become very stiff. In fact, the clothes had to be torn. It had bloated. Okay. So the body was bloated, and was bloated. They said we had to tear the clothes off. We could not do it because the body had. I mean, I asked, and experts tell me, those who have done postmortem, the experts in doing all this sort of things. So I consider these people. So they, for example, the body cannot bloat in winters. In summer, it will take 48 hours. A person has been embalmed like this. An embalmed body cannot bloat in 48 hours. The body was bloated and all become very stiff here, and then this mark here. So then you get into the other Russian records. Russians have not released any record, but we have other records about Russia. In Russia, there was a protocol, and they didn't give a damn about somebody dying. But if somebody has died and the circumstances are suspicious, they will do postmortem. That was a must in Russia. Even during Stalin's era. Stalin's era also. Otherwise, there are other ways. Because if you can't do the postmortem, you will take out blood or take the organ out, and I'm sure Russian must have done that because it was on their head. Somebody comes to my home and dies, I'll be in deep problem. So they must have done it. It's very obvious if you see the entire circumstantial data. So they must have done it. So this
when the postmortem has not been done because the government of India did not allow it, we said no to them. They were willing. Russians offered postmortem. Yes, Russians We offered. offered. We refused. Government of India refused. We refused. So one way of doing it, you would take some. I'm told by the expert, you would take certain this portion of eye, whatever membrane is Some there, swab or you yes. take that in those days because we did not have DNA and other technology in those days. But and the spinal cord has a certain sort of fluid here. Some fluid is there. So they also take out this thing to find out whether or not some poisoning has been or not. Okay. So all this put together gives a very clear picture that there is substantial, substance to what the family had been saying. It seems like on available evidence, there's something wrong, and probably the death was not natural. There's some element of Circumstantial evidence put together Yes. point to the obvious. to the theory with the family with the Corroborated by the family members and the near and dear ones. So they're correct. That there's something wrong with the death. It was probably not natural. So that is the first conclusion out of it. Okay. On available evidence, it's not immutable. Tomorrow somebody else comes out with a better evidence, I'll agree. But as of now, this is somebody has to give me, for example, the expert are very clear about it. The body cannot bloat. It takes certain time for a human body to bloat. 48 hours in summers. And this is winter, and Prime Minister body has been embalmed in Russia. And then they are giving this point of later on when there was a discussion in Parliament, people raised all kind of questions. But they say that the body has become disfigured because of embalming. ये किसने आपको बेवकूफ ने बोल दिया कि body embalming के बाद वो हो जाती है? You go to Russia, you see the body of the Lenin there. It is as if he died yesterday. So neatly not done today. Stalin also was very neat and clean done. So are you telling me Russians did not know how to embalm a body? In fact, there were claims afterward, which I've discussed, that it was not embalming, it was a stomach wash. They were basically removing all the poison from the body. That's why the body had become black and blue, so to speak. Okay. So we had wonderful discussions in Parliament back in the day when this thing happened. So there were discussions, allegation, and what must be underlined, the most relevant points were made by people in the Congress party. While there were others, like Atal Bihari Vajpayee was probably the first person to talk about it. Rajnaran, you have quoted him from Rajnaran still was on the other side, because if you talk of Rajnaran, Rajnaran is on the other side because he had an enmity with the Prime Minister, so to speak. But I am talking about others like Mahavir Bhargav, MP Bhargava, and others who were Congress party members, and they made fantastic points about this thing, and government had no answer to it. So this put together, and there are multiple things. Of course, I cannot discuss everything. I don't read the book. So there are multiple things on basis of which I am forced to conclude that the death was not natural. Now, interestingly, as you said, that Shastriji's wife, Lalita Shastri, never believed that it was a natural death. But something happens, and I'll quote from the book, that Lalita Shastri found a note hidden in his spectacle case, जिसमें वो अपना चश्मा रखते थे. Written by Shastri in Hindi, it read, "I have been betrayed." Now this note is not lost, and you have written that one fine day she swallowed it up under some exceptional circumstances and never talked about it. मैंने ये भी लिखा कि उनकी मीटिंग किसी important व्यक्ति से उसके बाद follow I'm coming to it. अनुज राइट्स की किसी टॉप एग्जीक्यूटिव से मीटिंग हुई और उसके बाद से उन्होंने बात करना बंद कर दिया, और फिर अनुज लिखते हैं कि someday I will talk about executive it. से काफी ऊपर है. टॉप से बात हुई और फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, एंड समडे ही सेज ही विल टॉक अबाउट इट. अनुज आज बता दीजिए. नहीं समझे में आप मुझे फंसवाओगे यहाँ पे बनाने के इसके छोटे प्रोग्राम के चक्कर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल को यूट्यूब में डाल दिया और ऐसे नहीं होगा. हाँ, वो उनकी फैमिली को वो बताएगी, हम क्यों बताएंगे. तो वो है कि शी मेट एंड देन शी सेड कि ये आई थिंक शी सॉलिड बिकॉज दैट्स हर हस्बैंड्स लास्ट memory or whatever rather than destroying it, I will absorb it. So it's an old fashioned way. This is that you have to understand ki the psychology, mental makeup people was like in those days, and she was a lady who came from village, like our grandmother. That sort of mentality was there in those days. So that was a way of I will not destroy this piece of paper, but I will absorb it within myself. That was our last nishani, so to speak. तो वहाँ से उनका फ्लास्क वापस नहीं आया. हमने बोला कि उनको because she had a doubt. Flask and but diary. her doubts were not because of she had valid reason because of the same body bloating and all that. So she had her doubts. So what happened? That I think what I understood कि this Shastriji's mother was alive. And Shastriji's mother was the first one to find out, and उन्होंने कुछ किया था. उनका कोई टेक्निक होता मुझे पता नहीं, गाँव में होता होगा.
असली घी में कोई चीज़ डाल करके वो उनके पैरों में रगड़ा था उन्होंने, वो फिर कुछ 4-5 घंटे में सारा नीला पड़ गया। तो देयर इज सम टेक्निक, कोई हमारा कोई देसी टोटका होगा। सो तो इट वाज शास्त्री जी's मदर हु सस्पेक्टेड एंड शी ट्राइड दिस थिंग कि वो असली घी लेके उसमें कोई चीज़ डाली, उनके पैर में रगड़ा, वो एकदम से नीला पड़ गया। वो फिर जाके वो उन्होंने बोला मेरे that's a very valid thing they do. So there is something that is what the family told me कि that is तो अम्मा ने पहले किया, and then of course wife वो तो they were all distraught, but mother was like she found out, and then it became so that the entire family, as far as I'm concerned, they know this thing and they have told me this thing. So this is how they came to, and of course then Lalita ji said, I told you that when the body arrived here, Shastri ji's oldest son was there, Hari. Hari is no longer alive. So there were 4 of them. Hari oldest and Ashok was the youngest. Both are gone. In between there are 2. Anil and Sunil ji. So the other 2 are, and his daughters are also dead. So Hari made public statement that I was not allowed to come in front of, to touch the body or come close to it. Lalita ji knew about it, what was happening. So she had her own doubts, and then the condition in his body was. So because of these reasons and other reasons also that Hari said, I told people they should be post-mortem. इनको भी दिखाई दे रहा है कि post-mortem होना चाहिए. Everybody knew this has been for the last 100 years. If there is a suspicion of somebody being poisoned, the only way out is to get a post-mortem. तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये मत करो, अभी इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे करके ये ऐसे उनको बोल के वो बंद कर दिया उन्होंने. तो this is how this thing happened, and she continued to have those doubts all her life. बट कितने साल तक कौन कितना बोलेगा. प्रॉब्लम ये हुई कि अनलाइक द नेताजी इशू, ये इशू कभी ऊपर नहीं आ सका, कभी इस पर डिबेट ज़्यादा हुई नहीं. एक बार हुई, गवर्नमेंट ने डिबेट दबा दी पार्लियामेंट के अंदर, कमीशन इंक्वायरी कभी नहीं कोई कमीशन कुछ नहीं किया. सुभाष वाले में ये लोग दबाने का कोशिश तो पूरा नहीं किया. एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने घोड़े खोल दिए, दबा दिए केस. लेकिन सुभाष बोस इतना मशहूर है कि इसको दबा नहीं सकेगा. मूर्ति तो लगाई हुई है, वो पब्लिक प्रेशर में हो गया. वो पहली पब्लिक प्रेशर की बात है कि वो इतना बड़ा फिगर है कि आप उसको नहीं दबा सकते. उनके दिल में तो बैठे हुए आपके अपने अंग्रेज साहब बैठे हुए सबके, उनका बस चलेगा तो अभी यहाँ अंग्रेजों की मूर्तियाँ लगा देंगे, अभी भी हालत नहीं. लेकिन सुभाष को वो दबा नहीं सके, तो इसलिए उसका नाम आना पड़ जाता है. यू कांट हेल्प इट, राइट? You like it or not, but you have to take Subhash Bose's name. Indira Gandhi to take Subhash Bose's name because she cannot ignore it. The whole country knows that. But in the case of Shastri, they were able to suppress because he was not that famous compared to Subhash, even though he was country's PM. So people continue to have their doubts, but the case was as far as suppressed completely. And Lalita ji lived up to I think 1994-95. She had all her life, she never accepted the official version. Yes. Interestingly, you also mentioned about the Russian secret agency and the role of CIA, and you went on to refute these claims. ये सही नहीं लगता है. KGB और CIA का हाथ इसमें नहीं लगता है. What led you to this? Well, the first when you first we have come to the conclusion that the natural death theory is not correct. So when you accept for the sake of the argument that it may be a case of poison, it may be a case of a natural death. So then there are 3 options on table. The first is the Russians have killed him, second is the Americans have killed him, and the third is there's some internal sabotage. Yes. So these are the 3 theories on record. I mean, people have also come up with other theories like पाकिस्तान ने मार दिया होगा उसका. नहीं, पाकिस्तान को मारने का पहले और पाकिस्तान की किसी की इतना औकात नहीं थी हमारी कि वो जाके रशिया में मार देंगे उसको. वो भी अभी नहीं, कभी उसमें इतने पूरा दुनिया का मीडिया बैठा है वहाँ पे, हजार लोग, इतनी एक्सपर्टीज ना आज भी नहीं है हमारे पास में. हमारी औकात नहीं है वहाँ जाके मतलब 1 मिनट में मार देंगे. इट्स फिजिबल नहीं, अगर चाहते भी. और दूसरा कि दे हैड नथिंग टू लूज. इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, द अकॉर्ड वाज इन देयर फेवर. अयूब खान मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी मैन बिकॉज ही तो बॉडी को उठा के वो तो बेचारा यहाँ तक लेकर आया. सो पाकिस्तानी हैड आई डोंट थिंक सो दैट्स so the now comes the interesting part which people know very little about is that this is the only book on this issue as far as I know. Before me, one person attempted. He could not write a book, but he ended up writing a booklet, 90 pages. So I was in Gujarat, I was giving a talk, and I asked people, and this means new headlines in the Gujarat Samachar, is that कि दाहिया भाई पटेल का नाम सुना है कभी? तो किसी को पता नहीं दाहिया भाई पटेल कौन चीज़ है. हमें ये नहीं पता सरदार पटेल का लड़का भी था. सारी फोटो में देखते हैं कि मनी मैन बैठी है. अरे भाई, मनी मैन के साथ में कौन खड़ा हुआ है? इसकी शक्ल मनी मैन से मिलती है, वो उसका भाई है.
दहिया भाई पटेल वो 15 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पिताजी ने बोला कि आपने मेरे नाम का मिसयूज़ नहीं करना, उसने कभी नाम नहीं लिया पब्लिकली, तो हम लोग भूल गए सारी बातें। उनके शायद दहिया भाई के पोते मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के एमएलए। सो दहिया भाई पटेल वॉज द ओनली सन ऑफ सरदार पटेल। He came out with a booklet and the booklet title was शास्त्री murdered। ये बुक बैन हो गया, आपने कहीं से बैन नहीं, बैन करना तो ये थोड़ा बैन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो ये होता है कि गायब होगी यहाँ से, वो आपने यूएस से निकाल लिया। मैंने यूएस से किसे निकाल लिया, यहाँ पे गायब होगी, यहाँ की है ही नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑथर नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग मिल जाता है कभी, आप ढूंढो तो भगवान मिल जाता है, ये तो बुकलेट है। तो वो इन्होंने उसमें उन्होंने ये थ्योरी दी है दहिया पटेल ने कि रशियंस ने उनको मार दिया, और रशियंस का उनके हिसाब से एजेंडा ये था कि हमने शास्त्री को प्रेशराइज करके ये साइन करवाया इससे, कल को ये घर पहुंच गया तो वहाँ जा करके ये उल्टा पड़ सकता है, इसको यहीं खत्म कर दो। सो दैट इज द आर्गुमेंट ही टुक, एंड देन ही वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग दैट द केजीबी इज नोटोरियस, दे आर नोन फॉर द pumping of people here and there and all that, and then they have done it. So he basically put the blame on the Russians and Indian government. We are also part of them, but it is Russians who done it. But this theory was not acceptable to Lalita Shastri, and it makes a lot of sense. I mean, to bomb somebody in your home, I think it makes no sense. It's to a friendly state. Even unfriendly, you will not do this thing. I mean, even Pakistan will not call you in your home and kill you. This kind, nobody does that kind of thing. पकड़ जाएंगे, और तो वहाँ पे पूरा दुनिया का मीडिया वहाँ बैठा हुआ है करके वहाँ देखने के लिए। इतने स्पॉटलाइट में आप आज तक कोई पीएम किसी का हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहीं भगवान की वजह से नहीं मारा कहीं पे जाकर, कोई मर जाए G20 में भगवान मर जाएगा कोई दुनिया के अंदर, तो अपने घर में क्यों मारेंगे? रखा मारना है तो मारने की जगह बहुत सारी उनके पास, लेकिन बॉम्ब एनी वे। जैसे वो उसमें एक स्टोरी लिंक लोगों ने लगा दी कि बाबा को मार दिया उन्होंने। बाबा को मारने के लिए 50 जगह मारने के लिए आपने सुन के रखा ये को माशाल्लाह IB वाले आपको 50 जगह टपका सकते हैं। ये क्या जगह पूरा जहाज उड़ा गया यूरोप के ऊपर, स्विट्जरलैंड के ऊपर। स्विट्जरलैंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल रहा है, सबने अपना काला पैसा वहाँ पे छुपा रखा है, हमारा सबका कॉमन ग्राउंड है। वहाँ आप पूरा एक बोइंग जहाज को उड़ा देंगे एक आदमी को मारने के लिए, आप समुद्र में डाल दोगे ना, 4 बंदों को मार दोगे, उनको भी जवाब देना पड़ता है। कहते हैं बम्पिंग समबडी ऑफ इज वेरी सिंपल फॉर एनी गवर्नमेंट, वो इज वेरी सिंपल। आपको जाके अगर से ये टिप ऐसे करूँगा मैं, 6 महीने बाद आपका किडनी साफ, इट्स लाइक दिस, you can be bumped off. So why would I need to blow up an entire plane like it's complete nonsense. It doesn't make any sense. So Russian and दूसरा ये कि the reason why I have not agreed with the Daya Bhai Patel's theory or the dominant view that the Russians have killed him. If I have done something wrong, मैंने अगर कुछ गलत काम किया मैं छुपाऊंगा। तो रशियंस ने 2 अच्छे काम किए जिसकी वजह से उन पे आप नहीं उंगली उठा सकते। एक तो ये कि उन्होंने छुपाया नहीं, इनफैक्ट उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया आपको, हमारे उनको सस्पिशन हुआ था कि ये नॉर्मल डेथ हुई, तो उन्होंने आपको ऑफर किया हमारे को। अगर मैंने गलत काम किया होता मैं कभी ऐसे काम नहीं, चुपचाप बंद करके भगा देता। तो आई वेरी मच डाउट कि रशियंस का इसमें, और इनफैक्ट इवन बाद में जो कम से कम जो नोट्स मैंने देखे और देयर आर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर फ्रॉम द अमेरिकन साइड, सो इवन अमेरिकन्स एट द लेवल ऑफ हेनरी किसिंजर हु वाज अदरवाइज this American president Nixon's NSA and Home Secretary of State, Nixon was known to abuse everybody, even most anti-India president ever. No, I think I must say something in this favor that he abuses everybody. It's not just Indians. He abuses his own ambassador also. So that was off the record discussion which got recorded. So it was a misfortune. So I don't like him as an Indian, but to be very it's a very candid conversation where it was a candid, it was not meant to come to public domain, right? So it's like say कि हम दिल्ली में सारे गाड़ी लॉन्च करते हैं लेकिन उसके रिकॉर्ड होगी वो पसंद, तो उसने सभी को गाली दिया, उसने किसी को नहीं, उसने अपने पाकिस्तानी को, उसने अपने एम्बेसडर को बोल सेम ये वर्ड यूज किया उसने यहाँ पे। तो even that Nixon and Kissinger, when they're talking, even there Kissinger saying कि nobody is will accuse the Russians of doing this. In fact, they were willing to host Shastri and his wife. So the Russian thing is out as far as I'm concerned. It's like doesn't make any sense. And you don't have to kill somebody in your own home. You can do it anywhere else. And all the same, they had offered postmortem. They had offered which we declined. So that's the fault lies with us. The second thing which I wonder if you read the entire chapter on the CIA thing. Right. उसमें एक बहुत बड़ा वो लाना जरूरी है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 30 years पे वो डिक्लासिफाई करते हैं। हाँ, बिकॉज अभी वहाँ से कुछ रिकॉर्ड निकले वहाँ से अमेरिका से, तो उनकी आप 50 गलतियाँ निकाल दो लेकिन CIA वाले रिकॉर्ड पब्लिक करते हैं।
दिखाते 30 साल पे अपने फाइल्स को डिक्लासिफाई पहले भी निकाल देते हैं, और वहाँ पे उनका मैरीलैंड में जो उनका और अब गए वो वहाँ पर और आपने वहाँ से कुछ वो भी जा documents सकते हैं, निकाले। आप भी जा सकते हो। नेशनल आर्काइव में आप जाइए मैरीलैंड के अंदर। अनुज ने अपनी बुक में लिंक्स दे दिए हैं CIA के फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। वो तो आपको सबको मालूम है, आप तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ मैरीलैंड में जाएंगे, यू नीड योर पासपोर्ट, गो टू दी अमेरिकन नेशनल आर्काइव। वो सेकंड फ्लोर में उन्होंने पूरा कमरा जो CIA का सिर्फ उसमें उन्होंने इतना बड़ा वो रखा रखा कंप्यूटर वहाँ पे, तो उसमें पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ऑल इन दैट थिंग। तो आई टोल्ड देम कि यू पीपल कम टू इंडिया टू सी ताजमहल, हैव कम टू सी दिस मशीन। सो दे अलाउड मी टू टेक आउट सम डॉक्यूमेंट्स आल्सो, दे वर वेरी हैप्पी। सो ऑब्वियसली दे अलाउ यू, दे डोंट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नाम नोट कर लेंगे, वो ठीक है, वो तो मेरा नाम उनकी वेबसाइट पे है, वो कोई मुझे आई हैव नथिंग टू वरी, आई एम नॉट इन अनलेस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू शुड नथिंग टू वरी अबाउट। सो द थिंग इज कि ये यू गो एंड यू सी यू चेक। नाउ द प्रॉब्लम वो हमारे यहाँ पर है, इसके चक्कर में लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं आपको असली बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे और ख़ासकर हमारे सोसाइटी के अपर जो लोग हैं, उनको एक बड़ा फितूर है, और इसके बारे में अमेरिकन को पता नहीं है। मैं उनको भी इन्फॉर्म किया कि ये लोग आपकी कंट्री में आके कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे आके आपको गाली देते हैं। और ये हमारे देश में, और ये खासकर 60s में स्टार्ट हुआ कि फॉर एवरीथिंग अंडर द सन यू ब्लेम द CIA। इमरजेंसी लगी तो कहते जी ये सारे के सारे जेपी मूवमेंट का GP CIA का अन्ना हजारे CIA एजेंट है, और ये अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका ने कश्मीर में हाथ डाला है, अमेरिका ने ये करवाया वो करवाया। ये इनको बीमारी है, और ये वही लोग हैं, ये तो पता नहीं अमेरिकन उनको अपनी कंट्री में घुसने क्यों देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। जो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, सारे बच्चे वहाँ बैठे हुए और यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि CIA ने करवाया, तो बच्चे को वहाँ की भेजा भैया। अब इतना ही बुरा कंट्री है तो मत जाओ वहाँ पे। यहाँ बैठ के बोल रहे हैं CIA ने करवा दिया, कश्मीर में करवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब जगह ये लोग उनका नाम ठोकते हैं। एक राजीव गांधी असोसिएशन के बारे में भी आपने थोड़ा सा लिखा है। I have to talk about Rajiv Gandhi because I knew that the concerned director CBI, I knew very well. The thing that I mentioned the context when you say it's a conspiracy theory. There are many other conspiracy theory क्या होती है आपको मैंने एग्जांपल में दे रहा हूँ। राजीव गांधी conspiracy theory मतलब वो सुन के सिर पिटने का मन करता है। कैन यू इमेजिन हमारे देश का गृह मंत्री खड़ा होकर के लोकसभा में स्टेटमेंट दे रहा है कि अमेरिका ने मार दिया राजीव गांधी, कि राजीव गांधी है बिकम द वर्ल्ड लीडर। FTT सबको मालूम तो है। पागल हो आप लोग, शक्ल देखो शीशे में अपनी। तुम कहाँ अमेरिकन कहाँ है, तुम कहाँ से उनके बराबर में, कहाँ अमेरिका तुमसे घबरा रहा है, ये कहाँ से आपके ये इल्यूजन दिमाग में पैदा हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, चलो अभी तो भगवान की देश थोड़ा प्राउड आ गया हमारे बात पे। 84 85 क्या क्या क्यों मरेगा अमेरिका राजीव गांधी को, कौन सा थ्रेट अमेरिका को, क्राइसिस हो रही है तो क्यों टारगेट करेगा। तो ये बैठ के उल्टी सीधी थ्योरियां बैठ के, अभी 3-4 जनता बैठी है, वो बड़े बड़े हमारे पत्रकारों के का नाम भी लिखा मैंने, ये बैठ के वो थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं साहब, ये तो राजीव गांधी। अच्छा ये थ्योरियां फ्लोट है, उसके बाद देखिए कैसा पब्लिक का पैसा वेस्ट किया जाता है। क्योंकि हमारी बारे में बोलते हैं सुभाष बोस शास्त्री के बारे में, तो आई हैव टू गिव देम अ रिबर्टल। दिस एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल एंड प्रिपोस्टरस एलिगेशन वाज लेवल्ड इन पार्लियामेंट बाय द होम मिनिस्टर। उसके बाद इन्होंने वो कमीशन बिठा दिया उसके ऊपर, ठीक है, वो जैन कमीशन का। और वो जैन कमीशन ने बोला इस पर और इंक्वायरी करवाओ। फिर उन्होंने एक MD में बना दिया यहाँ पे करके, टू फाइंड आउट हु इज बिहाइंड। 1-2 हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पहुंच गए वहाँ पे कमीशन के सामने, और वहाँ जाके बोल रहे हैं कि यासर अराफात ने बोला था कि उसने मारा है। हियर से यार, वही चीज़ मैं सुभाष बोस में बोलूँगा, आप बोलता है हियर से है। यासर अराफात कौन है भैया, उसने कहा, उसको कैसे पता कि CIA ने मारा राजीव गांधी को। तो all kind of ulul julul story, all kind of conspiracy theories, they went and people at the level of foreign secretary जाकर के बकवास कर रहे हैं जाके उसके सामने, जैन कमीशन के सामने। फिर उन्होंने उसके ऊपर MD में बना दी, और वो MD में अभी मेरे ख्याल से बंद किया 2 महीने पहले, 2 साल पहले। 24 साल तक इंक्वायरी चली है, पैसा नहीं फूका उसमें। हम हमारी बारी में आप बोलते कि पैसा फूका। द फर्स्ट आर्गुमेंट की क्या होगा, छोड़ो, चला गया, क्या करना, आगे की बात करो। तो राजीव गांधी में क्यों 24 साल तक इंक्वायरी कर रहे थे बैठ करके आप लोग? पब्लिक का पैसा नहीं फूकता वहाँ पे, क्या निकला बताइए। आपने टीम बनाई है, 24 साल इंक्वायरी करी है, यू वर लुकिंग फॉर द फॉरेन कंस्पिरेसी, देयर वाज नेवर एनी फॉरेन कंस्पिरेसी। LTT ने हमारा, तो उसमें क्या, राजीव गांधी में कोई मिस्ट्री नहीं है, LTT वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। आप ढूंढ रहे हैं उसके अमेरिका में एविडेंस मिला, कुछ आपको है नहीं। 24 साल आपने पैसा फूक दिया पब्लिक का, उनके कोई खर्चे रह गए होंगे ना पूरे करने में। तो ये उसमें ये चीजें निकाल करके, तो पॉइंट ये कि दैट इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी एंड देयर आर मल्टीपल अदर कंस्पिरेसी थ्योरीज।
वो कि वो बॉम्बे में जो हुआ, मुंबई में हुआ, वो उसके पीछे सीआईए और मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन था, ये डिकी राजा ये भी बोल रहा था। क्या क्या बता 26 लाइन अटैक दैट इज अ carried out कंस्पिरेसी। by आप the उन RSS। केसेस की बातें कर रहे हैं। जैसे बारिश वाले केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए मेरे बारे में, आप लोग को, हम तो कोर्ट कचहरी में जा चुके हैं उसको लेकर के। सो दिस इज व्हाट दिस सेड। तो सीआईए थिंग इज पेटेंटली नॉनसेंस कि सीआईए ने मार दिया भाभा, सीआईए, आपको पता ही नहीं सीआईए क्या चीज़ है, क्या अमेरिका है, क्या चीज़, कहाँ पे वो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात आती है, कहाँ वो, आप कौन सा आपके पीछे पड़ा है आपके, ये इस तरह की बातें करते करते। इनफैक्ट जो रिकॉर्ड वहाँ से निकल के आया अमेरिका से, शास्त्री जी when he went to Tashkent, he had taken, in a sense, he had informed the Americans about it. So America had no problem with India and Pakistan going and talking in Tashkent. उसका लास्ट शास्त्री जी का जो लेटर जो लिखा उन्होंने, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा है वहाँ से, ताशकंद से। उसके बाद में उनके आपको ऑडियो अवेलेबल है कि व्हेन शास्त्री जी डाइड, प्रेसिडेंट जॉनसन ने क्या बोला, उनकी वाइफ ने क्या बोला। दे वर वेरी सैड because Shastri ji was supposed to come to White House afterwards, and then Indira Gandhi did go after the same, I believe, when she became prime, because the Indian PM was scheduled to go to America thereafter. So they were very, and they were very sad. In fact, there's an audio tape which I have referred to. Yes. So that he was thinking in terms of कि I should go. President Johnson, America का president, वाइस प्रेसिडेंट जाए या प्रेसिडेंट जाए, इस पे बात हो। vice president, and vice president I think Herbert, whatever he came, so he did not go. उसमें आपके रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। दे नेवर सस्पेक्टेड, उनकी सीआईए के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि दे वर पॉजिटिव अबाउट शास्त्री। कोई उन्होंने साफ मेंशन किया कि हिंदुस्तान एटम बम नहीं बना रहा है। शास्त्री जी भाभा के लेटर हैं कि हम नहीं बना रहे हैं। तो किस बात की थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं कि भाभा को एटम बम के लिए मार दिया, कोई सीआईए को उस पर हाथ नहीं है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड चाइना, आई कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान, एन अमेरिकन, आई एम सॉरी, यू हैव नो आइडिया व्हाट अमेरिका वाज इन 65 एंड व्हाट यू वर। वी हैव नो थ्रेट परसेप्शन, हमारी को स्टैंडिंग ही नहीं है सामने उनके सामने। तो ये CIA is cock and bull story. So you have the Russian angle out and the CIA is out. So which brings us to the इंडियन साइड। एक प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम मेरे फेफड़ों में खांसी कर रहा हूँ, मैं ब्लेम तो कर रहा हूँ कि इसने हवा खराब कर रखी, प्रॉब्लम तेरे फेफड़े के अंदर है। अनुज, आपने मेंशन किया है डॉक्टर चुप के बारे में कि कैसे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेथ होती है। मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको फैक्ट बताया। हाँ, कि ऐसा हुआ है, बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब उसमें और भी चीज़ें। इनफैक्ट रिसेंटली आई हैड अ कॉल फ्रॉम आउटसाइड दिस कंट्री, फ्रॉम द ग्रैंडसन ऑफ द IB ऑफिसर हु वाज विद शास्त्री। So because then we did not have the SPG तो बनी है आफ्टर आई थिंक राजीव गांधी के बाद बनी है। तो अभी तो आपको अगर PM के घर में जाएंगे तो पूरा आपको स्कैन कर देंगे, वो अलग कहानी है। अभी तो यू कांट कम क्लोज टू PM, बट अर्लियर स्पेशली दोज हु हैव रिकॉल, अर्लियर वाज नॉट लाइक दिस। सो व्हेन शास्त्री जी वेंट टू ताशकंद, ही हैड ओनली वन सिक्योरिटी पर्सन विद हिम फ्रॉम द IB, व्हिच इज मिस्टर आर कपूर, जॉइंट डायरेक्टर IB के थे, वो साथ में गए थे। तो कपूर साहब ने रिपोर्ट ही करने की, मैं तो सुन के हैरान हो गया। ये तो IB वाले तो ऐसा होता है कि अगर ऑफिस में चाय पियेंगे उसकी रिपोर्ट बनाते हैं लोग कि मैंने चाय पी है, 4 कप पिए, 4-5 कप पिए, उससे रिपोर्ट ही फाइंड करी प्रधानमंत्री ने कि कैसे कमाल हो गया ये वहाँ पे। ये इन्होंने डॉक्टर चुप वॉज द पर्सन हु वॉज शास्त्री जी पर्सनल डॉक्टर फॉर मेनी ईयर्स। सो उसके बारे में फैमिली के लोगों ने और सब लोगों ने ये थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं, बोला कि उसको ही वॉज बम्प्ड ऑफ, as is the case with the John F. Kennedy case ki wahan pe there were many people who could have given information, they were bombed out. In fact, JFK case has become alive again. रामनाथ के बारे में भी आपने लिखा है कि yeah, he was bumped off one of his so that is a because this is the same thing has been said by even JFK, and the reason I must mention because JFK has become alive in 2 months. I mean, last month there was a new development on this issue. What people had been saying for 30 years, in fact, there's some level of truth in that thing. Anyhow, so the thing is कि इन्होंने क्या नाम है कि डॉक्टर चुप हुआ था कि उनका जो डेथ हुआ है वो 77 के आसपास हुआ। तो वो राजघाट के पास में वो गाड़ी चला के आ रहे थे, वो थे, उनकी मिसेस थी, वो भी डॉक्टर थी यहाँ पे, और उनके 2 बच्चे थे। तीसरा लड़का उनका मेरे ख्याल से यहाँ करने था, वो नहीं गया। ही इज लिविंग बट को छोड़िए। द थिंग इज कि ये वो पीछे से आकर के ट्रक ने टक्कर मारी, दोबारा वापस आता है। नहीं, देन डॉक्टर साहब कम्स आउट टू सी वेदर द कार हैज डैमेज और नॉट, एंड द सेम ट्रक अगेन कम्स एंड डज इट। तो इस तरह के ट्रकों से मारने के जो केस हैं, जो मेरे को समझ में आता है, दिस वाज प्रॉब्ली द इजीएस्ट वे टू बम्प ऑफ पीपल इन दोस डेज।
अब तो आजकल तो जमाना बेटी बहुत बच गई थी ना The इनकी baby was crippled One to the extent child. she might still be here, not very far from where we're sitting, but she was never in a position to talk. But there was a son who was not there. But then what would they know? I mean, they have to worry about their own lives afterwards. So, but Dr. Chug and his wife and son died. The daughter was in a very bad shape. She was unfortunately not in a good shape. She probably still there, but another son who was not in that. So I do not know, but to me it doesn't look like an average accident that you are hit from behind, then you come out, then you again hit by the same truck. So that seems to be very पूरी suspicious. सीरीज निकलती है। हाँ, इसी केस को अगर अलग करके अगर यही सर्कमस्टेंस अगर किसी और केस मान लीजिए कोई यार कोई छोटा मोटा एमएलए को डेथ हो जाती है और उसमें ये केस डाल दो, ये मीडिया वाले अभी एकदम से उसको डिक्लेयर कर देंगे कि मारा गया उसको, बिकॉज वो तो एकदम से सस्पिशन निकल के आएगा ना। तो दैट इज सो चुका है कार्य, ये बिल्डअप हुआ करते करते देन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली the government has not done anything about it. I mean, they suppressed information. They did not allow a discussion on this case. There were demands. They did not give any detailed answer in parliament. So there's hardly anything available in Can we go back to the IB officer's son or grandson who called you from the States? No, he called, let's say, वो private बात है दादू माफी में करके, but the thing is कि that the IB officer did not file any report about it. Can you imagine Very the unusual. prime minister of the country dies in a foreign country and the IB joint director of the IB, he has not filed any report to the IB. Am I to believe it? One thing that I believe is security was taken very lightly those days. You would see the PM. No, they will not take it lightly. I can give you endless documentation that even if you have a chaprasi ka file, वो भी report करता है. They are very meticulous. I mean, this is entirely different subject matter. Actually, I talk about that. ये हमारे दिमाग में फितूर बना रखे हैं कि वो को बैठ के चरखा काटता है बैठ के आईबी का डायरेक्टर, वो सारे काम जो अमेरिकन करते हैं हम भी सारे काम करते हैं, एंड इट्स फ्रॉम पीपल लाइक फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी एंड सो फॉर, क्योंकि अब ताशकंद इज नाउ पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान का एम्बेसडर ने आकर के आपको ऑफर किया कि आप कोई इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। स्टेटमेंट है, गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट कहती है कि इट विल इम्पैक्ट आवर फ्रेंडली रिलेशंस विद, तो द थिंग इज कि उसमें फिर ये उसके बाद में हुआ क्या कि 98 में जाकर के देयर पर्सन कॉल्ड अहमद सतारोव, ही वाज द रशियन कुक, क्योंकि वहाँ पे 2-3 कुक रशियन थे और एक इंडियन कुक था राचा में जहाँ वो ठहरे हुए थे। तो अहमद सतारोव द कुक 98 में वो आके उसने उगल दिया। अच्छा, कब किसी इंडियन को समझ में नहीं आया, कोई इंडियन मीडिया वहाँ ऐसे तो ये सारे लंदन में बैठे होते हैं, ठीक है, किसी हमारे वहाँ पे किसी इंडियन, लेकिन इंग्लिश अखबारों ने पकड़ ली खबर, तो वहाँ पे ब्रिटिश मीडिया में खबर चली कि अहमद सतारोव ने बोला कि हमको ये बाद में उसको एक्सपैंड हुआ भी जाकर के, तो व्हाट एक्चुअली ही सेड व्हिच वाज पब्लिश्ड लेटर ऑन इज दैट जब मैंने आरटीएस स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर खबर छपी, वो भी रशियन पेपर में छपी है। अहमद सतारोव सेड कि रात को 3:30 बजे इन्होंने केजीबी के बंदों ने मुझे घर से उठा दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पॉइजन कर दिया, उठा के हमको ले गए इंटरोगेशन के लिए। इसका मतलब रशियंस को वेरी स्पॉट पे डाउट हो गया। It is not something which happened later on, because the assumption was, which I also thought as much, that the story, the claim that Shastri Ji was killed or there was a poison, it started after Shastri Ji's body was brought to India and it found to be in a very different state. No, there and then, immediately after his death, the Russians thought that there was something wrong, and they picked up the Russian cooks. अब उसने कहा कि मेरे को जाके उन्होंने वहाँ पे इंटरोगेशन की थी, ऐसी खतरनाक करी थी कि मेरे को तुतलाने की बीमारी हो गई डर के मारे, और मेरे जो हो गया दूसरे आदमी के बाद जैसे शाहजहाँ के बाद वेर हो गए थे ना, कहते हैं अंतरात्मा के मरने के बाद में, तो वो रशियन बड़ी खतरनाक टॉर्चर करते थे वो। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि देन ही से कि देन दे ब्रॉट दैट इंडियन कुक आल्सो टू द इंटरोगेशन चैम्बर। आप मुझे बताइए, जो आदमी इंडियन एम्बेसी का एम्प्लॉई है, आपको लगता है कि बिना इंडियन एम्बेसडर की नॉलेज के वो उसको वहाँ लेकर आएंगे? तो अगर उसको आप ये बोल देते, मैं सारे में जब मैंने को मुझे ये मालूम चल गया तो मैंने सब रिकॉर्ड में ढूंढता रहा कि एक लाइन मुझे दिखा दो कि रशियंस फेल्ट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, दे डिड एन इंक्वायरी, दे फाउंड नथिंग। ये 3 अगर लाइन लिख दो, मैं किसको हाथ में लगाऊंगा? आप मेंशन तक नहीं कर रहे, आपका कुक की इंटरोगेशन हुई है वहाँ जाकर, क्यों नहीं आपने जाकर पूछा उसके बारे में? ये बातें वहाँ से निकल के आ गई। अब दूसरा ये है कि वो हमारा एम्बेसडर साहब कौन था, हमारे टिक्कू कौन बैठे हैं वहाँ पे, कौल साहब जो थे वो इसको कह रहे थे हिंदी मुंहफट आदमी था एक नंबर का, बदतमीज मुंहफट एंटाइटल्ड, और बैठ करके अपनी किताबों में दुनिया जहान भर के दूसरों के चिट्ठे खोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है,
लेक्चर दे रहा ज़्यादा कि अमेरिका में बोले, उसके मुँह से चू तक नहीं की सवाल इसके बारे में, शास्त्री के बारे में कभी नहीं, क्यों चुप क्यों बैठा भैया, तू तो मुँह फटाती है, जब तू 50 बातें बोलता फिर रहा है, जाके तू लेक्चर दे रहा है, किताबें लिख रहा है, हर एक पे पर्सनल एलिगेशन लगा रहा है यहाँ वहाँ पे चुन चुन करके, तो तूने क्यों, तू यू आर द मेन पर्सन सिटिंग इन ताशकंद, so you have written only one line in your book that Shastri died heart attack there. That's all I have. That is all you want to say about such an important issue of our history. फिर कौन सा आपके बारे में और चीजें निकल के आ रही हैं उल्टी सीधी, वो गलत कहानी है। तो उसमें so I mean if you take, I mean I keep saying, and it is mostly in the case of Subhash Bose, had it not been Subhash Bose, it was somebody else. सुभाष बोस छोड़ो, कोई आतंकवादी भी हो, उसकी भी अगर डेथ हो जाएगी तो बवाल मच जाएगा देश के अंदर, रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ये करने की, तो ह्यूमन राइट्स उसके वायलेट हो रहे हैं, वो सुभाष बोस की बारे में छोड़ो, क्या करना क्या, वो एक अलग कहानी। तो ये प्रॉब्लम आ रही कि ना, वी जस्ट गो बाय यू नो मीडिया में, बिकॉज जिसका इंटरेस्ट है, जो कोई लॉबी है, अगर कोई लॉबी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी, लॉबी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर बोथ सुभाष बोस एंड शास्त्री, देयर इज नो पर्टिकुलर लॉबी व्हिच इज वर्किंग। क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग ऑडियंस की तरफ से। यस Anuj, I hope I'm not. It can be not. It can also be an observation and a critique also. It need not be a question per se. Anuj, my question to you is, you're ruling out KGB's role. Yes. Role completely. On available evidence. Yeah, but going by a KGB official's statement, Yes. he had said in his book about Indira Gandhi, because she succeeded Lal Bahadur Shastri. So now Indira Gandhi was being paid by the KGB, and she was so hungry for money that she could not even allow the suitcase to be given back to the KGB. So the relationship was so close, it's quite possible that everything was fixed up. No. And maybe we are assuming that the communist regime worked in tandem, but they also had various authorities. Like the party is having different authority, the communist is having different authority, and they may be in cohort with the Nehru Gandhi. There are two things. First of all, when I say that Russians have no involvement, that means the actual act of killing somebody. Thereafter, in cover-up, they may be involved, because obviously they had known all along what really happened, and they have never come out with the truth. So they may be part of the cover-up. But the second thing, the reason why I cannot put this thing on Mrs. Gandhi, you need a very big, to mix allegation of that level. Yeah, I have not a solid evidence. The basic premise is that people say, and this is what people think, the KGB did not like Shastri because Shastri was being, both America and this thing, and Indira Ji was probably more Russia. And in fact, this is what really happened. So they say the Indira Ji was propped up by the Russians. Now, unfortunately for that, there is no proof as of now. Even the Americans agree that Indira Ji was the accidental prime minister. वो ऊपर के सब लोग लड़ रहे थे, उनको खड़ा कर दिया. So till such time, I have been told allegation that the Russians were sitting in Delhi for 14-15 days and they ensured that she was elected the PM. I have no way to prove that thing. I do not know. I need to have evidence. So till such time we can establish that Russians had a hand in her becoming the PM. I'm sorry, we cannot tie this to her. But she is accused of cover-up, and so are other prime ministers. तो cover-up तो है. उसमें एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, आपको सुन के आज के दिन में वो छोड़ जाएंगे. हुआ क्या था कि शास्त्री जी के जाने के बाद में उनके जब यहाँ से जाने के बाद, मतलब 3 तारीख को वो गए हैं यहाँ से, उसी दिन के अगले दिन में एक उनका नाम का लेटर छपता है, ब्लिट्स, रूसी करंजे की वो आती थी पुराने जाने में टेप्लॉइड, उसके अंदर एक शास्त्री जी का लेटर छपता है which is saying कि I am going there and I want we will ensure the peace is restored. Very gung ho kind of a thing, he mentioned. Now after 1 year, Shastri ji is gone, whole thing is settled. An article appears in a newspaper in Beirut, and that newspaper keeps on repeating the American CIA agenda sometimes. That is again picked up by some papers in this country. That article leveled some allegations, and the allegation on number three allegations were there. A, that Russians actually played us false. They supplied us substandard weapons. They were only using us and Pakistanis to build up their own profile, because Tashkent was the first ever big summit organized by the Russians. ये अच्छा लगता है ना, पूरा G20 क्या हो गया, वो अपना वो प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे थे कि उससे पहले सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियंस करते थे इसमें गेम्स, जो आज हम लोग कर पा रहे हैं कि हमारा भी होता है कि G20 जो कभी सिर्फ DC में होता था वो आज दिल्ली में हो रहा है. So Russians were also coming new in the game, so it was an event. So India was not consequential. And the third thing they said, the letter was fake. It was planted, and the intention was that once Shastri comes back to India,
he would of course will publicly say कि this is nonsense, you cannot put a fake letter which I never wrote. Yeah, इसको लेके तगड़ा बवाल मचा. Now the letter was fake. Letter was fake. Eventually it is proven it is evidently fake letter. उसको लेके पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है. कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट इशू किया, सबने किया कि गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना चाहिए इसके ऊपर. आप प्रधानमंत्री के नाम का झूठा लेटर आप डाल रहे हैं पेपर में, ये क्या मजाक ना रखा. और लोगों ने ये एलिगेशन लगाया, भाई पटेल ने बोला कि वो लेटर का मतलब ये है कि अगर शास्त्री जिंदा रहता, वापस आते शास्त्री जी, एंड ही वुड हैव पब्लिकली सेड कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैव रिटन, सो दैट्स व्हाई ही वाज बम्ड ऑफ. So that letter was fake. The government never had any inquiry. The other point is, I don't know whether Kuldeep Mayer, who was the media advisor, was speaking the truth because he was of leftist leaning and he had all the reasons to be close to the Indira establishment. Quoted him in your book. No, not quoted, but I've also given the background. So I have met Kuldeep ji. तो Kuldeep जी का एक कहानी मैं क्लियर कर दूँ आपको. वो ये है कि जब वो घटना घटती है, तब से लेकर के 2009 तक उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला इस केस में. He always supported the official theory. ये लोगों में confusion है. कुलदीप जी never officially raises doubt till 2009 when I filed an RTI. It became a news. It is only then he has spoken. आज मैं तो हैरान हो गया कि मैंने कुछ देखा फेसबुक वगैरह यूट्यूब में वीडियो बना रखे हैं. यार काम तो किया हमने, वो माल मेरा निकाला हुआ है, वो उसको एट्रीब्यूट कर रहा है. Kuldeep sir never uttered, I was a very nice person, I met him, that's fine. But Kuldeep sir, starting from 1966 to 2009, he never questioned anything. It is only after 2009 when I filed the RTI. And when the information comes that PMO is holding only one paper and MEA will not give any files and so on and so forth, it is only then he began talking. But problem है कि वो उनका आउटलुक में कवर स्टोरी उनको बना के देगी सारी के साथ. Kuldeep Mayer is disputing it. But he did not do so till 2009 till I had done something. आप मुझे दिखाइए 2009 से पहले कुलदीप सर ने कभी स्टेटमेंट दिया. तो एक जगह तो उन्होंने मेरा माल उठा करके ना, मैंने चीज़ निकाली है, तो कह रहे कुलदीप नैयर जी ने आटे डाल दिया, उसने डाली भैया. तो दैट इज हाउ. No, I will not say because you are so old and all that. Not him, but others have done whatever. But I think Kuldeep ji opened up only very late in this life. Did you question him, Kuldeep ji, that why did he? No, then he said, I met him towards the end of his life. So Kuldeep ji publicly questioned कि there's something wrong. We had our doubts. No, why did he speak earlier? Did you? अब इतना ज़्यादा सर बात करने का टाइम नहीं था, लेकिन but he gave very good information that Mr. T.N. Kaul immediately after when he was the ambassador of India to Russia when this thing happened. Immediately afterwards he became the foreign secretary. He said that Mr. Kaul called me up and he badgered me to say something against a poison theory. He tried to imagine तो आज के ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी अगर फ़ोन करते हैं अर्नब गोस्वामी को कि भैया तो ये लैंड डाल, अर्नब उसका क्या हल करेगा, या कोई भी एंकर उसका हल करेगा, देखना था उसको. ये उसने किया. तो then he added to the whole story by giving these details, but it was only after 2009, not before that. Although there is one thing in my mind. If I see the story and if I go back to the prelude, Tashkent happened because of 65 war. Basically, there was an agreement between India and Pakistan was supposed to take place. And let's talk a bit about 65 war. Was that a natural war? Do you think that had any triggering point with the Shastriji's death, or that was a natural misadventure by Pakistan? No, because I have not studied that. That's not my domain. I'm only concerned with the death part. So since I am ruling out any Pakistani hand, so I will not. No, I'm not talking about Pakistani hand. As you rightly said, पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं कितना बड़ा स्टेप आज भी ले लें और कल भी ले लें. So they are paid assassins. Their domain is very limited in different domains. But I'm talking about the hands and powers behind that. If it was not KGB, it was not CIA. अब उसमें एक अलग-अलग कहानी निकल के आती है. उसमें अलग-अलग कहानी. अब शास्त्री जी ने क्या वहाँ के किसी को पता नहीं. कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि he actually raised the issue of Subhash Bose there. Yeah, that's what I'm coming. But I have no evidence in terms of data. You mentioned this thing briefly in your book, India's biggest cover up. I think so. Here also, the last I chapter. mentioned that, but, Yeah, last chapter. but I don't have any evidence for it. I don't know, because people say, Shastri Ji's family say very clearly that Shastri Ji wanted Subhash Bose's family also confirmed it. Ki when he went, because he did something very, which was very, difficult to You shared a understand. photograph also, the person who was very similar to Netaji. Not very authentic. Again, it's a long story. It's a very long story. The thing is that the person who has done it was once upon a time known to me very well. Okay. उसको ही मैंने ये जुमले 4 सिखाए थे कि तेरी एडवांटेज तेरी मेन एडवांटेज ये है कि तू बैठा हुआ है. He's a Dutch citizen. He's an Indian, but he was virtually born in Holland.
ऐसे बात किसी भी अंग्रेज की कोई खबर लेके किसी एक्सपर्ट की वो यहाँ डाल दे, ये सारे के सारे गुलाम के औलाद ये छक्के को कवर देंगे यहाँ पे, तो उसने वो यूज़ कर लिया, क्योंकि किसी भी अंग्रेज का नाम लेकर किया कि सी एनी नॉनसेंस पीपल हियर विल बाय. सो द थिंग इज द एक्सपर्ट हु हैज गिवन दैट रिपोर्ट दैट की वो शक्ल मिलती है, उसने बोला कि दिस रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. आई एम सॉरी, if I will go to an expert, I will want the expert to be willing to stand. जैसे हम लोगों ने अपने सुभाष वाले केस में जो expert handwriting के दिए, they are willing to appear before court of law. If an expert is not willing to say in the court of law what he or she has written, he has no way. And second thing, मैंने सुभाष को उसको देखा नहीं है, पर होता है कि आप शक्लें सबकी मिलती जुलती हैं. आप खड़े होंगे, आपकी बुआ की और चाचा मम्मी की शक्लें सबकी मिलती हैं. You came to know एक same family background. सुभाष को उसकी फैमिली के अंदर सब लोग की शक्ल यूजुअली उनकी माँ पे गई, उनके कई भतीजों की भाइयों की करके, इवन जो 15-15 साल के बच्चे हैं उनकी शक्लें भी फैमिली में शक्लें मिलती हैं. तो आई नो हाउ ही यूज्ड टू लुक लाइक, क्या उनकी हाइट थी, क्या कंप्लेक्शन था, ऑल दैट. आई एम सॉरी, दैट पर्सन डज नॉट लुक लाइक सुभाष. एनीबॉडी वेयर्स अ चश्मा सुभाष पर्सन, इट्स लाइक दिस. कोई एग्जांपल सुभाष पर्सन नहीं हो सकता. And it is cock and bull story. It has nothing to stand on. And I think that in the night, Shastri spoke to his brother-in-law. The story is that Shastri Son-in-law or Son-in-law. the story goes like this. The story goes like this, which is on record, that about the Tashkent summit happened 4 or 5 o'clock. वो जो शेख हैंड हुआ था, 8 बजे उनका भी पार्टी हुई है वहाँ पे, म्यूजिकल शो वगैरह, खाना वाना खाया. 10 बजे वो दाचा में आ गए. तो दाचा में सिर्फ वो 5-6 बंदे बच गए, बाकी इनके अलावा किसी को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो वहाँ पर 10 बजे शास्त्री जी ने हल्का सा खाना फिर खाया. He must have had not had anything there. At about 10:20, which would be like 10:50 है, because आधे घंटे का फर्क है ताशकंद से, उनको यहाँ से इंडिया से पहले फोन आया PM के ऑफिस से. उसके बाद उनकी फैमिली से बातचीत हुई. So he wanted to know what was the reaction here and so on and so forth. Now the problem, the quality audio is very bad. So Lalita ji couldn't understand, couldn't talk and all that. And so he spoke to son-in-law, VN Singh, ये सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के डैडी, संजय नाथ सिंह जी के पिताजी, और वो son-in-law से बात की है. तो अब उनकी बातचीत जो हुई है, वेल आई वुड इमेजिन, अब ये फैमिली वाले कहते हैं कि ही हैज सेड कि आई लेट पीपल से दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, आई विल कम बैक टू इंडिया एंड आई हैव गॉट अ वेरी बिग न्यूज़ एंड पीपल विल अंडरस्टैंड, समथिंग लाइक दिस ही सेड. बट पीपल से एंड अज्यूम कि ही मेंशन्ड सुभाष बोस एंड ऑल दैट. आई हैव नो डाउट, आई हैव टू हैव एन एविडेंस इन ऑल दैट. सेकंड थिंग, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि शास्त्री जी जो कंट्री के होम मिनिस्टर रह चुके थे, जो कंट्री के प्रधानमंत्री थे, और ये बगिंग सिर्फ वो नहीं करते. हम बगिंग में, मेरा अलग टॉपिक है कि बगिंग करने में हम सबके उस्ताद हैं. हमारे सामने अमेरिकन फेल है, हम उनकी तरफ पकड़े नहीं जाते, ठीक है, वो अलग टॉपिक है. तो हम लोग करने के उस्ताद हैं. शास्त्री बीइंग द होम मिनिस्टर मस्ट हैव बीन वेरी मच अवेयर कि द रूम इज बीइंग बग्ड, ठीक है. वो इस तरह की ओपन सीक्रेट बातें नहीं बताएं. दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो इट इज सेड, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्रूफ फॉर इट. जहाँ तक लगता है कि जो इनकी ट्रीटी हुई होगी, जो 4 बजे इन्होंने हाथ मिलाया होगा, मेरे को जो लगता है कि उसके बाद ही इनका मर्डर प्लान हुआ होगा. और जो इतनी जल्दी मर्डर होगा, ये इंडियंस ही कर सकते हैं इतनी जल्दी, कोई और इतना जल्दी. आई वुड इमेजिन कि उसमें फिर है ना कि अगर किसी ने प्लानिंग किया तो प्लानिंग तो पहले से इतना जल्दी प्लान नहीं करता. ये इंडियंस ही कर सकते हैं पहले से प्लॉटिंग हुई, प्लॉटिंग जो अगर हुआ होगा तो. संग्राम ने इस बुक का हिंदी अनुवाद किया है, तो इसमें भी है चीजें साथ. और आपको लगता है कितने पीसफुली ये इनको ये टॉक्स करके और ये लिख के आप गवर्नमेंट को समझा सकते हो, जैसे गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, और कुछ नतीजा जो मेरा समझ में मेरे को जो आया है गवर्नमेंट के बारे में, ये है कि पॉलिटिशियन को एक ही लैंग्वेज, 2 चीज़ से बात करता है. वो वोट नहीं, वोट प्रेशर भी छोड़े, वोट पब्लिक प्रेशर मतलब वोट. तो अगर उनको वोट नजर आ जाए किसी चीज़ में करके, they will do it. उनको और किसी से मतलब. हाँ वो तो है. तो फिर इसमें वोट कैसे? उनको उनके हिसाब से वोट अभी नहीं है. फिर दूसरा ना कि उनको बैलेंस आउट करना पड़ता है कि रिश्ते भी खराब होंगे. नेताजी के लिए कुछ फाइल भी क्लासिफाई की थी, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा फायदा होगा उसका. इलेक्शंस थे थोड़े दिनों It is not because of West Bengal election, because the process started much earlier. So that is not the issue. That is a different thing altogether. वो अलग कहानी है. मोदी जी को इंटरेस्ट था, उन्होंने खोल के देखा. वो खोलने के बाद बस हमको उन्होंने अपनी जो भी करा था, लेकिन he did not know. धर्म तेजा की कहानी बीच में आती है. सारी बातें बोल दूँ, किताब नहीं पढ़ेंगे ना. सारी बता दूँगा, किताब नहीं पढ़ेंगे. सारी बातें बताइए, थोड़ा सा बताइए उसका. देखिए ऐसा है कि वो था कि उसमें एक एलिमेंट आ रहा कि लोगों ने, अडवाणी जी ने धर्म तेजा का नाम दिया.
So some people have directly, indirectly indicated it is not, the thing was done by, not by the cook. It was धर्मा तेजा का नाम लोगों ने जयंती धर्मा तेजा. तो जयंती धर्मा तेजा जो था वो न्यूक्लियर फिजिस्ट था, जाना होता. So I want to know. That is what actually I want to I want ask. to know. I want to, for example, understand if somebody has been poisoned with some nuclear thing, with the body temperature or not. I don't know. So Jhanti Dharma Teja was there. People say he was friends with the Gandhi family. He was friends with Mr. T.N. Kaul. T.N. Kaul ऐसे आदमी का रिश्ता था करके. तो लोगों ने, and he was a very, you know, उसके सामने विजय मल्ल्या बच्चा. एक तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ये टीवी देख के समझते हैं कि ये को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. मैं उसी में आ रहा हूँ, थोड़ा ये समझते हैं elaborate कि करते हैं। आज के ज़माने में स्कैंडल होते हैं. हमारे कौन से ज़माने, पहले के ज़माने में लोग बड़े दूध के दूध हुआ करते थे. ठीक है, स्कैंडल पहले भी होते थे और आज से ज़्यादा खतरनाक हुआ है. लेकिन वो जो मीडिया नहीं था आपका, ना सोशल मीडिया, ना किसी माल्या और नीरव मोदी दोनों से ज़्यादा बड़ा बताया है. उसका पहली उसकी बीवी अमेरिकन थी, वो मर गई, तो उस पर एलिगेशन लगा रहे कि उसका उसने हाथ साफ किया. फिर दूसरी है उसका भी मेरा मुंह Was he को on an official trip there or was he? How was he involved? he knew he used to go. He was a globe trotter. He had offices in different countries. तीन मूर्ति भवन, he had a free entry and all. फ्री एंट्री हर जगह यूरोप अमेरिका में घूम रहे हैं करके. फिर वो पर कितनी अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर मर गया है, चाहे शक वाली बात है कि नहीं है, तुम उसका पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर का. मतलब सबसे बड़ी अजीब बात तो वो ये है कि है. they were able to do it. They were able to cover it up because in those days we did not have social media. We didn't have the media as strong as it is today. So it was very easy and people are mostly illiterate. मतलब we only had government channels. Government Private था channel, नहीं, social media चैनल भी नहीं थे उस टाइम, तो टीवी भी नहीं था, Mouthpiece, तो बाद में दूरदर्शन, yes. तो वो भी कुछ नहीं था. तो कोई उस टाइम पे ये चाहे शक या पॉइजन दिया नहीं दिया, मतलब अपने आप में ही अजीब सी बात है. अपने बात है. एंड एनी अदर कंट्री they would have been जैसे they would have been, I would expect much more from the government. You want to ask something? कोई क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल है पूछना, क्रिटिकल है मेरा. अच्छा Mr. Teja ki baat कर. Are you convinced that he had something hiding or something? He was a right person on the wrong place or wrong person at the right place. Dharma Teja was a very controversial person. I mean, he was known to be close to the one particular family. He was there, and when Advani ji is taking his name in Parliament, he was there. That's what is indicating something. So this is very. Had it been not Shastri, or if it's somebody else, that's what I'm saying. If it's not Shastri, if it is somebody else, because the thing with our country, you know, things are not same for everybody. जो हरकत प्रशांत भूषण ने करी है वो आप अपना करके दिखाया तो हमको सुप्रीम कोर्ट 2 रुपये में छोड़े आते, ₹1 हमारी जान निकाल देगा उसके बाद में. तो वो चक्कर है कि थिंग्स आर नॉट सेम. तो आई हैव सर्टेन आइडियाज व्हिच आर, वो मैं बोलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा कल को यूट्यूब के चक्कर में. Any questions you have? बिकॉज पहले हम लोग एक नेशनल हाइप बिल्डअप करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर समाज को, कि पहले आप एक नकली मिथ क्रिएट कर दो, लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दो. अब चक्कर ये कि मैं उसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ. जैसे वो टिपिकल प्रॉब्लम जैसे आगे आ रही कि अभी उन्होंने कल वो अपना कि वो इसराइलियों ने वो कि वो दिल्ली में जो 3 मूर्ति लगी हुई है Haifa. हाँ, वो कहते हैं कि हाइफा में इंडियन सोल्जर गए थे उनको छोड़ने के लिए. अरे हम कहाँ चले गए, हम तो खुद गुलाम थे. हम तुम्हें कहाँ से आज़ाद कराएंगे, हम तो खुद उनकी नौकरी चले करते थे. और बाकी वो तो हुक्म के गुलाम थे. पैसा देगा वो देने वाला बात में, पैसा देगा तो देने वाला बात में गोली मार दी. पैसा दिया जाके चाइनीज़ को जाके मार किया. जाके पूछे जाके हांगकॉन्ग में कि वहाँ की लड़कियाँ क्या बोलती हैं हिंदुस्तान के बारे में, कि इन्होंने हरकतें करके वहाँ पर है किसी. तो हमने खुद अपने कोयले की दलाली में हाथ हमारे काले हैं. अब प्रॉब्लम ये कि मैं खुल के बातें नहीं बोल सकता ना, बोली करें आओ बिल्डअप कर दिया साहब, ये है हम तो ये थे वो थे, वो तो सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे, वो तो रैक टैग आदमी. तो क्या बोले Who benefited most out of Shastri ji? Huh? Who benefited most out of? Well, that Shastri? is the thing. Unless we have a clear records, documentation, etc. Because the allegation, as far as the story as a stand today, it is an internal hack. It is not Russian. It is not American. So obviously somebody internally must have benefited. But the problem is that beyond that point, I have not been able to get any evidence. This is beyond me. It has to be done by the system or the only things I have written about can be done. It is not rocket science. You have to and talk to Russians. जो सुभाष बोस के बारे में हमने मोदी जी को बोली, मोदी जी said I am going to talk to Putin about it in front of us. It was on television. They haven't, as far as we know. You would go and tell Putin कि साहब यार उनके घर में लोग मरे आकर के इतना बड़ा गट्ठा किसी बना के बैठा होगा 5 होगा कि वो हमें डॉजियर हमको दो. So you have to talk to Russians about it. He died in their country. They must have maintained lot of fights about it. वो जब तक आप वही that is the only proof is that
तो वोट से उनको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं कि ये कुछ करे समाज के अंदर उसका मेक इट एन इलेक्टोरल इशू। वो है इलेक्शन इशू बन गया, सारा यूपी खड़ा हो गया, यूपी के अंदर सारे के सारे एमपी जो है उनके वहाँ के सारे शुरू 15-20 एमपी खड़े हो गए, पार्लियामेंट में दावा बोल दिया, असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को बजट के टाइम पे उन्होंने जो नौटंकियाँ होती हैं तो बाकी चीजों के लिए होती है। औरों की नौटंकी होती है, चीखा मार शो कर दी, ये है गाली गलौज होता है, ये उसी तरीके से होगा। और very systematically. It is not something which can be done intellectually sitting here. We have, That's what I'm we are of saying, no, that's all what of I'm us are of saying. no consequence. एक्सेस नहीं है Yeah, आपको। that's what I'm saying. All of us, none of us are very, हम लोग we don't count. We have no existence. ना हम क्या, ये भी जो बैठे हैं कॉलोनी में, इनका भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक तो है नहीं इनका। तो वोट बैंक तो वो पॉलिटिशियंस इज नॉट कंसर्न विद दीस पीपल, ये तो वोट देने नहीं आएंगे। वोट बैंक का जो है वहाँ उनको नजर आ जाए कि सारा अब वोट बैंक का चक्कर है कि इसेंशियली वो कास्ट सिस्टम पे चलता है। वो आप इजीली आप ब्लेम ठोक दोगे पॉलिटिक्स, उसमें पॉलिटिशियन का कसूर नहीं है, कसूर इन लोगों का, लोग हमारा कसूर है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है। पॉलिटिशियंस आर नो पॉलिटिशियंस आर कास्टिस्ट, दे डोंट हैव अ नैरो विजन, अदरवाइज वो पॉलिटिशियन नहीं बने, सारे के सारे बहुत डिसेंट लोग हैं। No politician will tell you, whether from BSP or Congress or BJP, they all treat their children, their girl child very fine. तो common man जो है हरकतें करता है उससे की जाता है। So I just want to say one thing. Although the book is based on the true facts, ठीक है, but एक प्रेशर क्या आपने महसूस किया था जब शुरू किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है सोशल मीडिया पे प्रेशर आया आपको? प्रेशर है, पर मैं अपने बारे में नहीं, मतलब जैसे कि मतलब हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे कुछ एक ग्रुप्स होंगे जिससे आपको प्रेशर उन्होंने बताया ना विकिपीडिया में मेरे बारे में बकवास नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो मैं जाके मैंने आपने वो महसूस किया अलग से कोई प्रेशर आप पर पड़ा कि आप क्यों इस दिशा में जा रहे हो, गवर्नमेंट से कोई प्रेशर इस सब्जेक्ट पर क्यों लिख रहे अलग हो? अलग कारण होते हैं। कैसा होता है कि जो प्रेशर के बाद पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा देश है, एक तो अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग वी आर वेरी हैप्पी कि राहुल गांधी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इनको ये मीटिंग भी नहीं होती है, वो प्रेशर अपना समझ में आने का आपको, ये आप बैठोगे नहीं यहाँ पे, बात ही नहीं होगी, ये प्रोग्राम अभी मना कर दोगे, मुझे बात नहीं करनी, वो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्रेशर अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी अलाउड टू टॉक। हवा चेंज जाएगी, कोई आपके प्रोग्राम नहीं कराएगा। अब मैं पर्सनल लेक्चर कर जा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया कि भैया कांग्रेस रूल चलेगा, अपना दिमाग कंट्रोल रखे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हवा जो है बिगड़ गई है, अब मैं पराली जलनी शुरू हो गई है। इस गवर्नमेंट से तो कोई प्रेशर नहीं है। इसका ये एडवांटेज है कि ये गवर्नमेंट जो है ये इस मामले में, इसमें मैं क्रिटिसाइज करूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में मैं हर तरह के लोगों से मिल चुका हूँ, ठीक है, हर तरह के लोगों से, सैयद शाहबुद्दीन से लेकर के 7 लोगों तक मैं सबसे मिल चुका हूँ, पॉलिटिशियन से ऊपर नीचे तक। मैंने जिंदगी में आरएसएस से ज़्यादा लिबरल लोग नहीं देखे बीजेपी वालों से, कि उनके करवाए प्रोग्राम में आके मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैंने एक जगह कम्प्लीमेंट दिया, दे आर लिबरल, अरे उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया, मैं खड़ा होकर के उनके प्रोग्राम में उनके वैल्यू में उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उसके बाद में मुझे चाय पीने के लिए बुला के लेकर अंदर, नो व्हाटएवर दे आर, बट दे आर जनरस एंड ओपन माइंडेड कि दे क्रिटिसिज्म। एंड उसके बाद उनको मैंने बोला कि ये जो मैंने आपके प्रोग्राम में आपको क्रिटिसाइज किया, अगर मैं किसी और जगह जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी करूँ तो मेरी शाम को बॉडी मिलेगी पानी का, वो आपको क्लेम ठोकते हैं कि हमारे लिबरल हैं। तो लिबरल के मामले में तो कोई डाउट नहीं है, काम करें ना करें, लेकिन जितनी भाजपा और बीजेपी के राज में आपको खुली हवा मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी कांग्रेस की। वो परेशान नहीं करता और कुछ हेल्प भी नहीं करते, मतलब वो अलग कहानी है, लेकिन खुली हवा मिल जाएगी, आप खुल के बोल सकते हो, उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हो उनके फेस पे, और वो एडमिट भी करते हैं कि हमसे गलत है। कांग्रेस रहती तो ये आप नहीं, कांग्रेस में कांग्रेस होगी, आप संवाद ही नहीं करोगे, ये प्रोग्राम ही नहीं होगा, मैं पता ना आपको बीसी के वो उन्होंने डिस्कशन नहीं होगी इसके ऊपर। आप उन आदमी का मेंटल लेवल देखो कि जिसमें देश का गृह मंत्री खड़े होके आज ये कहते हैं कि देश के रिश्ते खराब हो रहे हैं। राजीव गांधी के मामले पे अपने खाने को पेट में मुट्ठी नहीं हमारे हिंदुस्तानियों के, और आप एलिगेशन लगा रहे हैं अमेरिकन के ऊपर, तब आपको नजर नहीं आ रहा रिश्ते खराब हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बुक में मेंशन किया कि अमेरिकन कांग्रेस में डिबेट हुई इसको लेकर के, वो पढ़िए क्या अमेरिकन कांग्रेस में उन्होंने क्या बोला कि ये हिंदुस्तान के लोगों का अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। हम तो आपको पैसा देते हैं, आपको मदद करते हैं, हम क्यों आपके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को मारेंगे? किसने मारेंगे? किसने मारेंगे? यू आर नॉट इवन कॉन्सिक्वेंशियल, यू आर नॉट इवन कॉन्सिक्वेंशियल, बोल रहे हम तो आपको पैसा देते हैं, आप लोग क्यों मानेंगे आपको? तो ये इस तरह का ना माहौल बिल्डअप है कि आपको बोलने ही नहीं देगा कोई, आपको वो तो ना रहेगा बाहर समझेगी बड़ी। तो ये वाला है कि एंजॉय कर लीजिए, बहुत खुला माहौल। अच्छा, इस प्रेशर से आप कैसे उभरते हो? जैसे कि ये कहा जाता है कि मैं बाबू से आपसे बात करूंगा कि जैसे कि मतलब जब आप कुछ लिखते हैं तो एक नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, मतलब एक एजेंडा के साथ में
तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि आप ऐसा करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, वो उस पर अगर कोई मुझे बोले, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक फॉर सुभाष बोस केस, तो वहाँ मुझे लोगों ने ऑलरेडी मतलब एक, मैं तो खुद पब्लिकली छाती ठोक के बोलता हूँ, एक वो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस आता है जनशक्ति बंगाल में, तो वो मेरे को सर्टिफाई कर दिया आरएसएस का एजेंट है। तो मैं तो अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ पब्लिकली। मैं वहाँ नागपुर में गया तो उसको मैंने मेरे को मिले वहाँ पे प्रचारक थे, मैंने कहा तुमने पूरा जीवन खराब कर दिया, संघ की सेवा में लगे हो, प्रचारक बन गए हो, तुम्हारे को सर्टिफाई नहीं किया, मैं सर्टिफाइड एजेंट हूँ आपको तो तुम कुछ पैसा दिया करो मुझे, रिफंड का एजेंट बना के रखा हुआ। लेकिन तो वो लेबलिंग होती है, बट लेबलिंग मैं यही कह रहा हूँ कि लेबलिंग तो होगी। आप किताब उठाइए, ये किताब उठाइए, वो उठाइए, आप देखिए मैंने कहाँ पे कोई मैंने कहा दिस बुक हैज नॉट बीन रिफ्यूटेड, किसी ने प्रूफ के साथ इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं या सुभाष वाले को आप रिफ्यूट करो कि मैंने एजेंडा किया है, मैं आपको चुन चुन के दिखाऊंगा कि मैंने आगे कितना क्रिटिसाइज किया बीजेपी को। मैं सिर्फ फैक्चर पे जा रहा हूँ, जब ये किताब कोई लिखूंगा तो मैं किसी उस पर नहीं चलूंगा। तो आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट इन व्हाटएवर आई एम डूइंग। आप पूछ रहे थे तो कुछ नहीं, आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू दैट इट इज सर्कमस्टेंशियल, इट इज वैलिड आल्सो अकॉर्डिंग टू मी। Shastri during his tenure did build up the dignity of the country a bit, his own dignity and everything, but quite systematically after he went, his profile was totally deflated and degraded. So the status he had built up, the status we had started respecting. I mean, I was a teenager. Conclusion of Anuj's book, Yeah. that it's an internal It was that points to something systematically was done to deflate the persona which he had started building up. Even despite the country being in a poverty state, despite the conditions being what they were, he did build up some dignity. But it was his persona was systematically deflated and degraded. वो तो हर एक सिस्टमैटिक में अगर हम बात करेंगे, वो सुभाष बोस वेरी क्लियर एग्जांपल। Now, I mean, I will be going into a different topic altogether. Maybe we should have, topic which is the main thing. The thing is, keep it some other time. I mean, I was looking. I mean, I'm just going completely off a tangent, but just to give you an idea कि how far things go. Now, luckily, many documents have come out now. तो हमने 1946 मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने स्टार्ट किए कि जितने आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपके आईबी के डायरेक्टर की रिपोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रिपोर्ट जो लंदन में था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड पर आ गया हाईएस्ट लेवल, छोटे मोटे की बात नहीं करता। तो ये कहानी क्लियर है कि सितंबर 45 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाने में नहीं, उनके स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। दिस इज सितंबर 45। नाउ सडनली आफ्टर 2 months थिंग्स स्टार्ट टू चेंज इन दिस कंट्री। वो रेड फॉर ट्रायल शुरू हो जाते हैं, करते उसके बाद में अगर आप वो रिपोर्ट पढ़िए सारी सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें, और ये क्या यहाँ से स्टेटमेंट जा रही है, वहाँ पे लंदन में कौन क्या बोल रहा है, तो वहाँ उधर से लेके करते आप लगा लें कि अगले 5-7 महीने में दे केम टू कंक्लूजन कि हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए। तो हम उस सारे के सारे नैरेटिव को पढ़ा, बड़े लोगों की सब चीज़ें देखा, और मैं उसमें वो बात ढूंढ रहा था जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अगर आज बोलते करते हैं कि किस अंग्रेज प्रधानमंत्री ने, किस अंग्रेज आईबी डायरेक्टर ने या किस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया है कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग धरने में बैठे हैं। तो अपना मिनिमल आपका जो फेमस कोई नाम ही नहीं है उसका, का इट्स नॉट अ फैक्टर, इट्स नॉट इवन मेंशन एनीवेयर, दे हैव नॉट गॉन बिकॉज ऑफ दैट। उसके बावजूद हमारे पे उन्होंने उठा करके उन्होंने ये जो गले में टायर बांध दिए, ये हम सब फंसेंगे उसमें, वो एक अलग कहानी होगी। गोइंग ऑफ टेंजेंट एंड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स कि आप G20 में बैठ के आप सारे वहाँ अपने खड़े कर दिए। भैया गांधी जी का तो मेन असूल है कि आप फौज डिसबैंड करनी है हम लोगों को, तो कब तो डिसबैंड, आप दुनिया को क्या भाषण देंगे बैठ करके, रादर देन प्रीचिंग टू द वर्ल्ड। दुनिया के लिए मैसेज है, हमारे लिए मैनकाइंड के लिए मैसेज है। मुझे पता है मैसेज क्या है, वो सारी फौजों में लिखा हुआ है कि फौज डिसबैंड करनी है, नोबेल प्राइज मिलेगा आपको बाद में, तो आप डिसबैंड करो ना। दुनिया को शांति का संदेश देने से पहले अपने घर में शांति लेकर आओ, पहले हम पहले खुद फॉलो करेंगे। स्वच्छता इज नॉट द गांधी जी मेन, उनके 3 फंडामेंटल, पहला फंडामेंटल उनका है नॉन वायलेंस। गांधी जी वाज अ पर्सन ऑफ पीस एंड ही मेड वेरी क्लियर दैट माय एम इन लाइफ इज टू ब्रिंग पीस फॉर द मैनकाइंड। और जितने भी आप गांधी बहुत मिल जाएंगे, आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, बहुत घूमते हमारे पार्कों में, सारे गांधीयन का कॉमन सबसे बात करें, मैंने कहीं से बात करी, वो सारे के सारे दुनिया में शांति लाने के इच्छुक है। बट ही रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम इंडिया फॉर वर्ल्ड वॉर, फॉर द ब्रिटिश, इंडिया की आर्मी के खिलाफ नहीं। हाँ, तो ऐसा कॉन्सेप्ट को आप कंफ्यूज मत करो, कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए। वो तो ये भी कहा था कि जितने इनके जब जापान को मारा तो कोई दिन में चिंता नहीं किसी को, और उनको एटम बम फोड़ उनके ऊपर। आर्मी के बेस यहाँ खुले, आधी अमेरिकन आर्मी यहाँ घूम रही थी बैठ कर,
वो टेंशन नहीं है, वो बनाओ, हमारा कोई नहीं चलेगा। दूसरे ये when it goes, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, सारा नैरेटिव चेंज कर दिया कंप्लीट, और वो दबा के बैठ गए। ये तो बहुत छोटी सी है शास्त्री वाला केस। नहीं, we as a country have failed We have Shastri. Yeah. Ask any how many people would remember 2nd October as Lal Bahadur Shastri's birthday? Everyone remembers as Gandhiji's birthday. How many people know? Now they remember because Gandhiji was a whole entire machinery behind. The whole entire machinery sitting, the entire machinery publicized. ठीक है, fine, but शास्त्री ने पॉइंट करता, स्कूल के बच्चे ने पढ़ा। Anyone उनका टाइम They remember. एक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Yes, Sanjay, please. Yes. keep in mind the time factor. Just one last question. We have quickly. It's not a question, like bumping का बोला था आपने, like Bumping is a normal language to kill somebody. yeah. Bumping is So does internal whatever the benefit they got, internal people, did they choose that KBN and Pakistan made that Ayub Khan का as a ground? They set up as a ground. देखो ऐसे ग्राउंड में दो ही थ्योरी आती है कि ज्यादा जिसका नाम लिया गया है, लोगों ने कुक का नाम लिया। कुक वाज दी वर्किंग अंडर द फॉरेन सेक्रेटरी पीएन कॉल साहब किसके रिश्तेदार आपको पता है। तो ये चीजें हैं, तो उसमें इसका नाम है। बाद में लोगों ने धर्मा तेजा का नाम है शो कर दिया। So एक आर्मी कुक है, दूसरा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। in case they did it in America, like the same thing, they are afraid of CIA, whether CIA can find the proofs immediately. Like KBN or KGN, whatever it is, like Russian secret agency, it was not able to, they covered up for other internal factor. If it is the meeting in America and CIA can find it out, are they afraid? It's not about being afraid when it comes to the relationship between two countries and all that. So this is something which has been simplified when we discuss Subhash Bose. He went to Hitler, said he's a bad person. No, when you go to a foreign country, you are only concerned with your own interest, overall interest, business interest, वो interest. तो वो आपको रशिया या अमेरिका इस पे कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज उनको कोई फायदा नहीं, इससे नहीं होगा। हाँ, लेकिन कल को अगर आप खुल के बोलोगे कि मान लीजिए कि उसके तरीके हैं, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ करने के तरीके हैं। तरीका ये कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन मूव करो कि पीपल ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट दी रशियन प्रेसिडेंट टू डीक्लासिफाई दिस थिंग। अब वो सारा रेजोल्यूशन पास करके एजेंडा लिया और मोदी जी वहाँ पे गए और वहाँ जाके उनको 2-3 साल को पकड़ा दिया। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसमें मुझे पता नहीं, लेकिन सुभाष बोस वाले केस में कि जब कोई फॉरेन में बंदा मरता है तो कैसे छोटी छोटी कंट्री डिप्लोमेटिक लेवल पे इश्यूज को छाड़ते हैं। तो देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इफ आई वांट टू गेट समथिंग डन फ्रॉम इट कैन बी डन। Governments are capable of everything. हमारे भी बहुत हमारी कैपेबिलिटी है। जब हमारे यहाँ पे वो उसका वो